Good morning. Hello, am I audible? Good morning, sir. Yes, you are audible. Hello. एक minute. Let me fix the my slides. Away. Yes. Now it's okay. Right. No. So let's start. Okay. So today's topic is social class, measurement of social class. Okay. Characteristics of social class. So now the first one is the social class. According to the contents I will teach today, that social class meaning, okay, social status, characteristics, measurement of social class. All right. So the social class is the division of members of a society into a hierarchy of distinct status classes, so that members of each class have either higher or lower status than members of other classes. It means, see, the class is division into 5 categories. One is called as the upper class, middle class, okay, working class, lower class, and laggards. So that can be classified into adopters, innovators, late majority, early majority, laggards, right? So other classifications like elite class, climbers, switchers, all right. So these are the ways the class is division into a certain hierarchy. The hierarchy may be on the basis of income, money, or the properties they belongs, all right, the occupations they are having, or the social status they belongs. Accordingly, the classes of groups of peoples are divided into subcategories, right? So that category is called as the social class. Is that clear? What is a social class? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Okay. So now the social class may be a simple example I'll give. Group of memberships to which an individual belongs are the social classes that influence him. In the social classes, we usually find people with a similar values, lifestyle, and behavior. Now, a marketer or a researcher needs to pay attention here because generally the buying behavior of people in a particular social class to some extent is similar. Though the level of influence may be low or high, he can tailor his marketing activities according to different social classes. Social perception is very important attributes that influences the buying behavior of an individual. Example, a person from a low income group may focus on price while making the purchase, while the persons from a higher income group may consider the quality product. I mean, see, the persons, those who are belongs to upper class, their purchasing behavior is totally different from the persons belongs to lower class. That means, suppose the lower class is used to purchase the needy products, whereas the higher class peoples definitely purchase the products of extravagant or luxurious products. Okay, whereas the lower class peoples can purchase cleaning plus pouches, whereas the upper class people same cleaning plus, but they will purchase in bottle. The difference is clear to you. I mean, from different categories, the purchasing powers are varying because they are having either money, occupations, or styles or social status. Hence, the purchasing power is also vary from person to persons. Okay,
the upper class people's purchasing power is like similar, maybe similar. Okay, sometimes because the lifestyle is same, the behavior is same, the values are same. To all categories belongs to upper class. Whereas the middle class people, they are also, they act like similar because their behavior is same, their lifestyle is same, and their values are also similar. Hence, the purchasing powers of different categories of social classes are similar. Hence, the market here, you understand, those persons are, creating needs for the customers. They must understand the social, classifications, the social hierarchies. Okay. Is that clear? Social class, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना में बोलो. Yes, sir. Yes. Okay. Sir. Next one is the social class and social status. Status is frequently thought of as the relative rankings of members of each social class. Either they belong with wealth, power, and prestige. It's been given by social comparison theory, states that individuals compare their own possessions against those of others to determine their relative social standings. That means, the rankings of the class, that is upper class, upper middle class, lower middle class, okay, working class, lower class. These rankings may be based on certain variables, like maybe having some wealth. Either the person is having some inherited wealth or the wealth he has got from by nature. Power, the person may be a very powerful man, like the, head of the village, sarpanch or the MLS, MPs. These are the persons, those who are having the power themselves and controlling a particular, society. Prestige, the persons belongs to either a CEO or managing directors, all right, or a big boss of certain companies or the government organizations. Hence, you will find their, rankings will be immediately transferred to, different social classes. Think about a person who was selling, vegetables in the street. His son becomes IAS. Now you will find immediately his social class will be converted to from lower to upper class. समझ में आ रहा है यार सबको? Yes, sir. Okay. Next one is the social status. The social status of individual usually comprise of an individual's attitude, class and prestige. समझ में आ रहा है? वो कैसे social status को हम लोग classify करेंगे? Either it's individual's attitude, class and prestige. See, attitudes are, basically based on two things, favorable or unfavorable. Last class I have told. Like that, in upper class people, suppose a new bike will come to the market and the cost is 20 lakhs. So the upper class people, without thinking anything, they will purchase because they are the purchaser of called innovators or adopters, adopting the product as it comes to the market. And their classes are different. Their prestige, they're very prestige oriented. So these three things makes a social status. It depends on the way we carry himself socially or the possessions at which he is in his work or family or even in his group of friends. The social status of an individual influences his consumption pattern. For example, a CEO may want to have a celebration and give a party to his colleagues, friends, and families. So for his social status, he may want to book a 5-star hotel, sometimes something like Taj or Oberoi instead of any other normal. Yes, when your social status is increased either by education or by
getting some qualified in entrance examinations like that. When your status is changed, immediately your possessions will also change, your style will be changed, your lifestyle will be changed, your purchasing behavior will be changed, your attitude will be changed, everything, and you will be get many prestiges from the society. Hence social status, when your position, you are jumping to different hierarchy of the class, then your social status changes. Think about a person who was in a upper class, but due to some bankruptcy or like that, his social status is decreased, he becomes bankrupt. Now he will come to the lower class. Hence you will find he will again do the same thing as the lower class was doing, because doesn't have money. Anil Ambani, you think about Anil Ambani. No, two Ambani brothers were there, Mukesh Ambani and Anil Ambani. See, Mukesh Ambani is flourishing like lips and bonds. His, income is 88.2 billion dollar, whereas the same money he has been got from his father's property, Anil Ambani, but couldn't compete in the business. Now he becomes a totally bankrupt. Okay. Now his style, though he's taking loans from the banks, but after sometimes you'll find he will be not less than a beggar, because of his social status changed. He couldn't compete in the business. He couldn't success in the business. Is that clear to you? Yes, sir. Convenient approach to social class. Social status is usually defined in terms of one or more of the following socio-economic variables. Either family income, I was telling these things to you earlier, occupational status, educational attainments. With three things, your status will be changed. Okay. So social class categories like upper, middle, working and lower. 5 types of categories are there. Sorry, in India, 4.3% people belongs to upper class. 13.8 people's percentage belong to upper middle class. 32.8 belongs to middle class. 32.3 working class. 16.8 is lower class. See, working class and lower class are what is the difference? Working class, they are having a continuous earning process, whereas the lower class, they may have, earning process. Working class is otherwise called as the blue collar employees. Middle class people are called as the white collar employees, because these two categories are having maximum percentage in India. All right, middle and working class. Whereas upper, middle and lower class, they are having hardly 32%. Is that clear? The classification is clear. Who are called as the upper class? Adopter categories are called as the upper class. When they are adopting any innovative products or any new products comes to the market, and they shows their attitude in the same way, are called as the upper class. Upper middle class people are called as the innovators. Innovators means when they will follow the adopters. After they see that the upper class people purchase the product, so that after their purchase, they will go and purchase the product. Hence, they are called as the upper middle class. Middle class peoples are the early majority peoples, because the maximum peoples are always thinking when the price of the product, they will not purchase immediately. They'll go for many inquiries before purchasing the product. They'll ask the friends, they'll ask the relatives, they'll ask the core groups, they'll ask the family members. All right, they will search in the internet, they'll go physically move to the stores. Many inquiries or informations they will collect, then only they will purchase. Hence, they are called as the middle class. Working class peoples, they will think that the price should come to their own level. When the product is obsolete, that time they will purchase the product. Hence, they are called as the working class. Lower class, sometimes they are getting the discounted
uppers, they are waiting when the price will be discounted to their, level of purchasing power. Hence, this type of categories are called lower class. Is that clear? Yes, sir. Okay. So a layer of society that is characterized by a specific amount of wealth, prestige, and power, defined as individuals and groups' standard of living and lifestyle. This is just a definition. Social class defines as individuals and groups' standard of living and life prospects. That's why they are called belongs to social class. So types of social class, as I have given you 5 categories of social class. All right. So social classes are, 5 types. In India, we are having 5 types: upper, middle, all right, middle, working, and lower class. So social class generally divided into 3 categories: upper, middle, and lower class. From there we are subcategorizing to upper, middle to lower. We are having a group called working class. For convenience, we can bring working classes in between the lower and middle class and create 4 categories as shown in the figure. I have given here 4, as well as you can also make a, distinction between upper and middle. There you can put another category called upper middle class categories. All right. So now next one is the characteristics of social class. How you can, identify a person's social class. The concept of social class involves families rather than individuals. Members of same family enjoy the same social status. See, when the persons belongs to upper class, their lifestyle is more or less similar. They always enjoy the highest priority of the society. They purchase the exported quality luxurious products. They don't prefer to purchase needy products. All right. You see, have your lunch. You can go to a dhaba or a small hotels, but they'll move, 5-star hotel, or instead they will travel to some international hotels outside India or outside their territory to have their lunch. So that type of persons are characterized as social class that you can identify. Suppose in a class, a student is coming by Mercedes and a student is coming by cycles. From that, differentiate that you will have that the person is having a upper class, he is a rich person, and he is traveling by Mercedes, and he may not be a poor person, but sometimes for style also people are coming by cycles. But when you are coming by cycles, some questions always arises. Thoda sa iske paas itna paisa hai nahi. All right. So these concepts are coming into the mind. Sometimes social classes usually meet the following 5 criteria. Number 1, bonded. Social class are bound by certain tacit restrictions. See, cases bonded by certain tacit restrictions. See here, suppose the lower class people will think, no, I want a Mercedes. Can he purchase? Definitely not, because he doesn't have that much income to, purchase a Mercedes. All right. Whereas he can purchase a, that means a cycle or a trolley like that for his daily livings. All right. Is that clear? अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Okay. So number 2 is mutually exclusive. An individual belongs to one social class and acts or behave accordingly. I have already told you social classes, when they are belongs to a social hierarchy, that particular stage, all persons may have similar behaviors, similar lifestyles, similar activities, similar attitudes, maybe similar. Okay, so that is called as mutually exclusive. All right. So they act also similar. The upper class peoples will behave similar.
whereas the lower class peoples will behave similar, middle class people will behave similar, because middle class peoples are always highest in number in the world. All right, because they are having a motto that they should have good earnings, so they are called as the climbers in otherwise. Okay, climbers means they want to get the success one step ahead. Every time they will move forward. Is that clear? That's why they belongs to middle class peoples. समझ में आ रहा है? अरे सब खामोश क्यों है? Yes, sir. Sir, one second, mutual exclusive, sir. अरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब देखो यार, they act similar. For example, a class of upper class. So think about the Bhubaneswar club in Bhubaneswar. So their lifestyle more or less is similar. See, a person to want to be a member of Bhubaneswar club need to be pay 5 lakh rupees as membership, and per month they are paying some membership fees. It is not possible for the lower or middle class to afford 5 lakhs as well as some membership fees every month. Whereas the upper class peoples or those peoples are, categorized on the same category. So they becomes the member because they knows that they can afford 5 lakh rupees. So they act similarly. Immediately, whatever the price charges monthly, they pays. Whereas once you want, a middle class people want to be a member, every month, suppose the price will be changed, he will have a question mark. क्यों यार इतना पैसा दे दूं, ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसा का इतना पैसा हम लोग क्यों दे, एक बार तो दे दिए, फिर बार बार क्यों? But see, upper class people, they don't have any grumbling attitudes. Immediately they pay because they know this is what they have to do with this group. So all group members are agreed. Whereas they don't grumble. Is that clear? Okay, okay. एक बार देखो भुवनेश्वर में जैसे कि हायाबुसा बाइक आया था, एक आदमी खरीद लिया था ज्योति मोटर्स, तो देखो उसके बाद कितने आदमी ने उसके बाद जो भी मतलब लालचंद का हो या others groups, they make a club that becomes a bikers club, and they are also purchased Ducati, like that bikes they have been purchased, becomes a bikers club in Bhubaneswar. Because they identify, अरे यार ये ज्योति मोटर्स खरीद लिया तो हम लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, यामा वाला बोला त्रिपाठी जी बोले हम भी खरीद लेते हैं, तो इन लोग ने सब खरीदना शुरू किया और उन लोग के क्लब बना दिए, उसको कहते हैं बाइकर्स क्लब. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Next one is exhaustive. Every member of society must fit into one social class. देखो यार, एक टाइम क्या होता है तो हम लोग को we are very confused to identify what type of categories the person belongs. When a person doesn't have a high income group but comes to shows himself as if he is having plenty of money, his dress appearance, his style, his way of talking is equal to a upper class, but when reality is he is not having that much money or income or occupation, but he shows his style because these sometimes they are presumed to be upper class categories. Is that clear? समझ में आ रहा है? Every member of society must fit into one social class. आप लोग दिखाने से कुछ नहीं होता यार, ये for the time being, है कि नहीं? But when the question comes, when you will identify, reality checks will be there, you will not be fit into that class. Hence all social classes should not be presumed to be belongs to upper or middle or lower. All right. एक आदमी क्या होता है ना, टीवी में देखा होगा, वो अपना बेटी के लिए टीवी खरीदने गया था, वो एकदम फूटा हुआ मतलब क्या कहते हैं ना ड्रेस पहना हुआ था, जैसे कि टीवी शोरूम में घुस गया, मैनेजर ने बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा, आपका ड्रेस में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. Hence sometimes विवेकानंद जी ने बोले थे, don't judge the book from its cover. समझ में आ रहा है?
कवर को देख के आप बुक के बारे में जज मत करो। तो इसी तरह वो आदमी जैसे टीवी खरीदने के लिए गया था, उसको मैनेजर ने धक्का दे के निकाल दिया, लेकिन ये बोला कि सर आई कैन परचेज योर होल टीवीज, व्हाटएवर टीवीज यू आर देयर, एंड ही सेड see that whatever money you are having you can take। वो जो कहते ना बोरी होता है, वो बोरी में जो पैसा रखा हुआ था, वो रिक्शा में आया था, वो बोरी से लेके आ गया, बोला कितना पैसा है तू ले ले, ये मेरे बेटी के लिए चाहिए। एंड देखो यार, उसके बाद उसको पता चला है कि यार ये तो पूरा होलसेलर डीलर है पोटैटो का, मतलब जितना पोटैटो आता है उसका होलसेलर डीलर है एकदम, मतलब द रिचेस्ट पर्सन, बट यू सी his dress appearances was like a vikari। So here sometimes Vivekananda ji also told, don't judge the book from its cover। हम लोग ने क्या बोले कि अरे यार ये तो एकदम लोअर क्लास पीपल होगा, वो टीवी का कॉस्ट है 1.5 लाख और वो पूछ रहे हैं सबसे हाईएस्ट कॉस्ट का टीवी में खरीदना है, मेरे बेटी को देना है गिफ्ट। देखो ये होता है, मतलब sometimes these are not always happens, sometimes it happens, but all social classes they act similar and must fit into one social class। When a lower class is promoted and got many incomes or sources, or some family incomes has generated, then you will find his social classes will fit, his purchasing power will be increased, hence he belongs to next higher classes। So last one is influential। There are differences in behavioral pattern between classes। See here, there are differences in behavioral pattern between classes। Sometimes you will find, the upper class peoples may not have the, power in the society, whereas the middle class people, those who are, having a good judgment capacity, they belongs the chief of that particular society। It doesn't mean that you will also belongs to upper class, you will have in democracy, those who are having influential, they will, belongs to their patterns of behavior will be reflected। All right, समझ में आ रहा है? Sir. Now classification of social class, Warner's index। Sometimes Warner has identified use of 4 variables as the index of social class: occupation, income, house, dwelling area। Right? So Warner has categorized social classes into 6 categories, that is upper, lower, upper, upper, middle, lower middle, upper, lower। तो ये जो कैटेगरी होता है, ये हम लोग चाहे कितना भी हम लोग को मतलब 3 कैटेगरी एग्जैक्टली होता है, अपर, मिडिल एंड लोअर, वहां से हम लोग सब कैटेगरी बना देते हैं। वार्नर भी वैसे ही सब कैटेगरी बनाया, और जो इंडेक्स की पॉइंट रखा था उसमें रखा था वो ऑक्यूपेशन, और एक रखा था इनकम, और एक रखा था हाउस, जिसके पास मतलब बड़ा सा हाउस है या उसका मतलब बहुत जगह पे हाउस है, घर में है, ड्वेलिंग एरिया है, और उसका जो पार्किंग एरिया कहते हैं, पार्किंग एरिया, पार्क्स, राइट, या उसका सम क्या कहते हैं वो जो फर्टिलाइज एरिया होता है, ये सब होता है ना ड्वेलिंग एरिया। इसको देख के हम लोग क्या करते हैं, सोशल क्लास को कैटेगराइज कर देते हैं कि यार ये कैटेगरी। देखो पहले जब रियल इस्टेट में इतना मतलब क्या कहते हैं डिमांड नहीं था, लोग गांव में रहते थे। अभी देखो गांव का लोग, भुवनेश्वर का जो आसपास गांव है, इन लोग देखो अभी इतना धनी रिच बन गए। कैसे बन गए यार? उन लोग का जो प्रॉपर्टी था उन लोग उसको सेल करने लगे, और सेल करने के बाद इन लोग का जो स्टाइल है इमीडिएटली चेंज हो गया। ओके, सो वार्नर हैज आल्सो क्लासिफाइड इनटू द सेम थिंग। ही सेड दैट तुम्हारे पास ऑक्यूपेशन आ गया या इनकम आ गया या तुम्हारे पास हाउस है या लैंड्स है, then you will be called, your classes will be belongs to different categories, either out of the 6 category you will be classified। All right, अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. Okay, so next one is social class and their buying patterns।
the buying behavior of individuals and groups are strongly influenced by the social class to which they belong. All right. So that means the buying behavior of individuals and groups are strongly influenced by social class to which they belong. Upper class का जो होता है ना, देखो वॉलमार्ट में और सुपर स्टॉप में क्या डिफरेंस है? सर डी मार्ट पता है? Radha Krishnan Dhamani, okay, he is called as the Sam Walton of India. 2002 में ये एक वॉलमार्ट डी मार्ट का स्टोर खोला था. अभी 2023 में अभी 200 प्लस स्टोर्स वो बना दिए. इसको कहते हैं ना डिस्काउंटेड स्टोर. देखो यहाँ से कौन लोग जाके खरीदता है? 80% of Indian consumers belongs to lower and middle class. They knows that they'll go and get the discounted prices of products from DMart. Hence, they can make a line also. But you see, the upper class people, upper class categories, the person, they will not stand in a line. Instead, they'll go to the super stop. Immediately, they'll purchase and they'll go, because you see the difference is in the DMart, the check-in counters are very, very limited. Whereas super stop, there are many checking counters are there. Immediately the person will purchase because they don't have the time. Hence, you will find the purchasing behavior is strongly influenced by social class to which they belongs. अभी समझ में आ रहा है? देखो हम लोग एक चीज को लेके इतना बार्गेनिंग करते हैं, वेजिटेबल बोलो, ड्रेस मटेरियल बोलो, शूज बोलो, जहां भी खरीदते हैं हम लोग बार्गेनिंग करते हैं. क्यों? हमारा जो कैटेगरी होता है इधर लोअर और मिडिल क्लास. अपर क्लास क्या होता है ना, वो खुद जाता है, जो भी प्राइस बोलो उसको दे देता है और चला जाता है. उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, because time is the most perishable factor for them. Hence they don't waste the time. They pay whatever the price is charged by the seller and immediately takes the products. Hence they are called as the upper class people. Whereas हम लोग क्या करते हैं ना, उसको इतना बार्गेनिंग करते हैं, सब चीज का बार्गेनिंग हम लोग करते हैं. इसीलिए हम लोग बिलोंग्स, हमारा जो स्टाइल होता है वो लोअर और अपर क्लास का हो जाता है. समझ में आ रहा है? नंबर 1 पॉइंट. जी सर. Okay, in a social class, people are expected to make same kind of purchases as are expected by their peers. See, people are expected to make same kind of purchase. जैसे देखो, लेकिन देखो sometimes ये ठीक नहीं होता है कि चलो यार, एक बार क्या हुआ, मुकेश अंबानी का बेटी जब होटल में खा रही थी, वो टिप्स दिया $500. समझ में आ रहा है? सुनो, एक अमेरिकन होटल में जब मुकेश अंबानी का बेटी खाना खा रही थी, खाना खाने के बाद जो टिप्स दिया $500 दिया वो वेटर को, से मुकेश अंबानी गए, वही सेम होटल में खाना खाए और वो $5 दिए टिप्स. तो वेटर ने पूछा, सर आपका बेटी आई और वो $500 दी और आप आए लेकिन आप $5 दिए, ऐसा क्यों? वो बोला देखो, वो जो मेरा बेटी आई थी उसका जो बाप है ना, वो नंबर 1 रिच पर्सन इन इंडिया, एंड शी इज हैविंग दैट कैपेसिटी टू स्पेंड. बट मेरा जो बाप था वो इतना रिच पहले नहीं था, उसके बाद रिच बना. हेंस मेरा जो इनकम था वो $100 के आसपास था. हेंस आई एम गिविंग द $5 एज माय फादर्स इनकम, बिलोंग्स टू माय फादर्स इनकम. She is giving the dollar because she is having the property, richest person of India, and she is having the money she can afford. समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है, समटाइम्स हम लोग सोचते हैं यार ये जो मुकेश अंबानी होता है वो एकदम सेम टाइप का खर्च करता है, वो सिंपल जिंदगी जीता है भाई, है कि नहीं? लेकिन उसका जो बेटा होता है और जो उसका जो बेटी होता है, इन लोग एक्स्ट्रा वैकेंटली स्पेंड करते हैं. समझ में आ रहा है? देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग को सुझाव गई यार, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू मेक सेम काइंड ऑफ परचेज एज आर एक्सपेक्टेड. समटाइम्स ये डेविएट हो जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज इट इज डेविएटेड. समटाइम्स ये छोटा सा एग्जांपल दिया था कि समटाइम्स यार ये इन लोग का जो परचेजिंग बिहेवियर होता है वो डेविएट हो जाता है, लेकिन नहीं, सोचिए अपर क्लास का जो परचेजिंग पावर होता है वो सिमिलर रहता है, सेम काइंड रहता है.
मिडिल क्लास का जो परचेजिंग पावर है सिमिलर रहता है, सेम काइंड रहता है एज ए लोअर क्लास आदमी, ऐसा ही है. एंड दे हैव बीन लर्न फ्रॉम देयर peers, I mean their parents or forefathers or their traditions or their opinion leaders or the I mean leaders of the society. From them they are learning. सी जाजाबर करके एक सोसाइटी है जहां पे जो सरदार होता है ना, he is called as the law of the land. Whatever he speaks, that becomes the law of the land. That means, you see, whatever he says, the jajabar family, they will have to obey and they will do the similar things. So that means they will follow the sardar's words. Sardar word is the law of the land. ये होता है यार, expected to make same kind of purchases as are expected by their peers. ये समझ में आ गया? Yes, sir. देखो अपर क्लास में क्या होता है, फोकस ऑन क्वालिटी मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज बोले तो कमोडिटी, ठीक है. फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी आई मीन आइडियाज, क्वालिटी पीपल, क्वालिटी एंड every time they will think about quality instead of thinking about the price. So upper class का एक ही चीज होता है, they are focusing on the quality of the product. समझ में आ रहा है? देखो, they are called as the apostle consumers or brand loyal consumers. Think about the upper class peoples are interested always purchasing color plus dress materials. Suppose color plus is tremendously increase the price, it will not affect the upper class peoples because they knows that the color plus is the best in India, and and they will go on purchasing the same price, I mean quality of product without thinking of the price. Whatever the price it increases, okay, doesn't matter to them. एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स. सी यार हम लोग जो खरीदते हैं यार, हम लोग चलाते हैं यार, चलाने वाला हम लोग जो काम चलाने वाला होता है उसको खरीद ले, चलो यार इसको क्यों इतना इन्वेस्ट करेंगे. बट दे विल परचेज द मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स फॉर देयर हाउस. देयर हॉबीज एंड रिक्रिएशंस आर आल्सो डिफरेंट. समटाइम्स their hobby is to travel, in summer season they'll travel to Himalayas, all right, or some other places where the snowfalls is there. So that is they are having the hobby of reading good books, biographical books. But you see, lower class people even doesn't touch the holy books like Gita, Mahabharata and Ramayana or Quran and Bible. समझ में आ रहा? ये जो होता है ना, हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी देखते हैं, या रोज नहीं. लेकिन इन लोग का तो हॉबी होता है, इन लोग सब पढ़ते हैं. Art, books and recreations. Okay, so here you will find they are focused on quality merchandise, expensive equipments. Their hobby is different, their recreation programs are different, their art, the books and recreation all are different from other categories. This is a small size segment with a lot of discretionary income. इन लोग के पास ज्यादा पैसा है, वो स्मॉल ग्रुप होते हैं. 4.3% मैंने बोला. हाँ, ये जो 4.3% इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इट इज 2.3%. वर्ल्ड का जो टोटल रिचेस्ट पर्सन है 2.3, 800 crores पीपल्स आर देयर इन द वर्ल्ड. whereas India and China belongs to nearby 400 crores. 50% of the world population belongs to India and China. All right, so total population is 800 crores with 195 countries in the world. All right, ये समझ में आ गया? Their buying behavior pattern, social class and their buying patterns. जी सर. Okay. Next one is the middle class. अभी तो देखे हम लोग upper class, middle class और working class items in fashion. They prefer on celebrity endorsement. What is a celebrity endorsement? Whatever their choice celebrities are wearing or eating or drinking, the same product will be utilized by the middle class people, like items in fashion, clothing, household products for children, products related with self presentation, etc. They will follow the celebrities, hence they are called as the celebrity dependent. All right, so they belongs to fashions. See,
when their favorite heroine or heroes, they are wearing the dress material, or I mean they are advertising for a product like Amitabh Bachchan ho ya Sachin Tendulkar ho ya Dhoni ho, isn't it? When they are advertising the products, people are immediately following, and they are adopting. They are called middle class people. So working class, however, loves for the present. The middle class is the reference group of the working class. I mean, इसे देखो जो working class होता है ना, they belongs to middle and lower. The in between classes, peoples are called as the working class, like technicians, sales executives, representatives. So they are called as the working class. So the loves for the present. आज जीना है यार, कल का बात कौन सुनता है? ठीक है, आज हमको अच्छी से जीना। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट को दोस्त फॉलो करते हैं, ये कैटेगरी को कहते हैं वर्किंग क्लास। द मिडिल क्लास इज द रेफरेंस ग्रुप ऑफ द वर्किंग क्लास। आई मीन देखो, इन लोग मिडिल क्लास में जाते हैं, लोअर क्लास में जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्या इनकम। सो लोअर क्लास में क्या होता है, प्राइस ओरिएंटेड परचेज, डिस्काउंटेड को देखते हैं यार, ये प्राइस कितना है, बार्गेनिंग करते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, वो स्विच करते हैं प्रोडक्ट को। दे आर नॉट ब्रांड लॉयल। Wherever the price, मान लो कि कोलगेट है और पेप्सोडेंट है, कोलगेट बोलेगा 50 ग्राम को 50 रुपया, पेप्सोडेंट बोलेगा 50 ग्राम को 30 रुपया, तो इन लोग कोलगेट छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ के इन लोग जाके पेप्सोडेंट को चला जाएंगे। क्यों? द परचेज द नेसेसिटी आइटम्स, देयर फोकस इज ऑन टू फुलफिल देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। इन लोग को नीड को फुलफिल करना है बस। इन लोग को लग्जरी नहीं चाहिए, ब्रांड नहीं चाहिए, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। So low income levels do not allow people in lower class to purchase expensive items. They go for economical purchase. देखो यार, पैसा तो है नहीं, इन लोग का तो सोच होता है, दिमाग होता है कि चलो यार हम भी मर्सिडीज चलाए, लेकिन क्या पैसा थोड़ी है। देखो, ये जो पैसा है वो एक साइकिल खरीद सकता है। इसको हम लोग को जो रियलिटी को मानना पड़ेगा, तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? लोअर क्लास that they are always not purchasing any luxurious product. देखो sometimes इन लोग भी खरीद देते हैं, जैसे जो साउथ इंडियंस होते हैं। देखो, इन लोग के घर में खाना नहीं होता है, लेकिन रजनी अन्ना का पिक्चर आएगा, उन लोग जैसे भी जाके देखेंगे। ये आप लोग बोलेगा सर ये कैसे हो गया? देखो, ये समटाइम्स होता है, ये एवरी टाइम नहीं होता है। समटाइम रेयरली एंड इट हैपेंस दैट दे आर आल्सो परचेजिंग द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें मस्लोस हायरार्की को भी पीछे छोड़ दिया, तो बोला कि खाना पहले नहीं है, खाना नहीं है, एंटरटेनमेंट पहले। ये साउथ इंडियन वाले का एंटरटेनमेंट पहले, उसके बाद खाना, उसके बाद सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? वो मसलो हायरार्की भी वहां पे आई मीन फेल हो जाता है। ये आ गया समझ में? दे आर बाइंग पैटर्न यार। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड सोशल क्लासेस। देखो, जो मार्केटियर होता है ना, वो कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है किस किस का क्लास में? Marketeers are interested in supplying right products to right customer at right time at right price with right promotions. इसको कहते हैं सेल्समैनशिप। आई मीन कुछ भी दो वो बेच देगा, कहीं पे भी बेच देगा, किसी को भी बेच देगा, किसी भी प्राइस में बेच देगा। वो जो स्ट्रैटेजी होता है उसको कहते हैं सेल्समैनशिप। So marketers select social classes which is better prediction of consumers lifestyle than income. देखो यार, मार्केटियर्स ऑलवेज फोकस ऑन मिडिल एंड लोअर क्लास, बिकॉज देखो इनको कन्वर्ट करना, कन्वीनियंस करना इजी होता है, वेरेज एक रिच क्लास को कन्वर्ट करना और कन्विंस करना इट्स नॉट सो इजी। ऑलराइट, सो रीजन फॉर शॉपिंग एंड परचेज आर आल्सो डिफरेंट अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस। समझ में आ रहा है? सो ऑलवेज मार्केटियर्स फोकस ऑन द 80% ऑफ कंज्यूमर्स, दैट इज मिडिल एंड लोअर क्लास। Hence, he knows that these consumers can be converted either by advertisement or the stories. जैसे नक्षत्र डायमंड होता है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की को देखने के लिए लड़के लोग एक डायमंड रिंग लेके जा रहे थे उसका घर, और उनके साथ उसका पूरा फैमिली थे। वो लड़की के घर जैसे पहुंच गए, वो देखा कि लड़की का दादी माँ के साथ इन लोग का भी फैमिली बैठे हुए। वो रिंग उन लोग ने दिए, डायमंड वाला, मतलब हीरा अंगूठा क्या कहना, वो लड़की को दे दी। और जब चाय सर्व किया जा रहा था, वो दादी जी जो होती है लड़की लोग का, वो ऐसे पी रही थी, शुरू शुरू करके बहुत आवाज करके पी रही थी, तो इनको इंसल्ट फील हुआ। अरे यार दादी ऐसा क्यों कर रही?
तब जो इन लोग जो लड़का लोग गए थे, इन लोग ने देखे कि यार वो लड़की का जो टोटल फैमिली है एकदम मायूस हो गई, बिकॉज दादी का जो वे ऑफ ड्रिंकिंग द टी वाज इज नॉट सो गुड. So all of the family members of this boys group, they also started, drinking the tea with the same sound, prr, prr, or surr, surr. ये एडवर्टाइजमेंट क्या आ गया? हीरा देने वाले का दिल भी हीरा जैसा होता है. ये समझ में आ गया ना? मतलब देखो, ये जो स्टाइल होता है एडवर्टाइजमेंट का, ये कभी कभी मिडिल क्लास को इतना इन्फ्लुएंस कर देता है. ये अपर क्लास को डजंट मैटर, इन लोग को जो चाहिए इन लोग जाते हैं और इमीडिएट खरीद के आ जाते हैं. वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं, इसको प्रमोशन में नहीं, इन लोग को लग्जरियस प्रोडक्ट चाहिए, वो मार्केट में जाते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट देके और खर्च परचेज करके आ गए. लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस कर देता है लोगों को, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को परचेज करने के लिए. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So next one is how to measure social class. So social class can be measured by three distinct ways. One is called as the subjective measure, reputational measure, objective measure. So subjective measures like individuals are asked to estimate their own social class positions. तो यार यहाँ पे क्या होता है ना, तुमको एक क्वेश्चनरी दिया जाएगा, तू सोचो, तू यहाँ पे लिखने से जो क्वेश्चनरी से पता चल जाएगा कौन सी क्लास में तू बिलोंग कर रहा है. So individuals are asked to estimate their own social class positions. वो जो क्वेश्चनियर होता है, वो क्वेश्चनियर से हम लोग को पता चल जाता है कि यार ये जो होता है ना, 10-15 क्वेश्चन दिया जाता है एक कस्टमर को या एक पब्लिक को, उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सा क्लास में बिलोंग्स होगा. एंड दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द सब्जेक्टिव मेजरमेंट. समझ में आ रहा है? देखो यार, यहाँ से क्वेश्चनरी में रहेगा आप कौन सी आई मीन आपका इनकम कितना है, कौन सी इनकम लेवल है, हेरिडेटरी कितना था, ये सब मतलब जो क्वेश्चन हो जाता है ना, और ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, ये जो क्वेश्चनरी से आप जब आंसर देने लगोगी, ये एक प्रेडिक्शन होता है कि यार ये लोग कौन सी क्लास में बिलोंग्स होगा. वो मान लो कि एक आदमी बोलेगा मेरा इनकम है 5 लाख से 10 लाख पर मंथ, तो वो अपर क्लास में जाएगा ही जाएगा. तो हम लोग एक ही क्वेश्चन से उसको आइडेंटिफाई कर देंगे. इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मेजर. मतलब when you are giving some questionnaire in the form of subjects, okay, and measuring the person's class, that can be easily measured from the questionnaire survey or experiment or observation techniques. Reputational measure number 2, informants make judgments concerning the social class membership of others within the community. देखो यार, इसमें क्या हो रहा है, रेपुटेशन जो मेजर होता है ना, जैसे गांव में एक ट्रस्टी होता है, एक हेड होता है. तो कौन होता है? जिसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा जमीन, ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, वो होता है गांव का जमींदार. इसका जो रेपुटेशन होता है, आप लोग देखा होगा जमींदार का जो, मतलब बहुत सारे पिक्चर में देखा होगा जमींदार कैसे होता है. इन लोग का जो रेपुटेशन होता है गांव में, वो जो बोल दिए वो फाइनल. जैसे कि एक एग्जाम्पल पहले दिया था, जाजाब और फैमिली का सरदार, इसी तरह होता है. और एक होता है ना, इनका जो रेपुटेशन होता है, अरे यार ये मतलब एक्स का सन है, एक्स का डॉटर है. देखो ये जो फादर का नाम लेके हम लोग बोलते हैं ना, इसका नाम अंबानी का सन है यार, ये अदानी का सन है. तो मतलब देखो इसका जो रेपुटेशन, वहां से हम लोग को पता चल जाता है कि ये कस्टमर या आदमी या पब्लिक बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सोशल क्लास. समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? क्या सब खामोश हो गया क्या? रेपुटेशन मेजर समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर. हाँ, और एक बार. क्या रेपुटेशन बोले तो क्या है? तुम बोलो पहले. रेपुटेशन किसको कहते हैं यार? मान लो कि एक कंपनी का डायरेक्टर है, उसका सन आके आप लोग के साथ पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे यार ये रेपुटेड आदमी का सन है, डायरेक्टर का सन है कि नहीं? तो हम लोग पता चल जाएगा कि यार ये एक कौन से क्लास में बिलोंग्स है. और हम लोग बोलेंगे कि ये एक पुलिस हवलदार का बेटा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ चलेगा, ये मिडिल क्लास का है. उनका रेपुटेशन है, एक दो अच्छा वाला हवलदार होते हैं, सब तो खराब नहीं होते.
अच्छा वाला हवलदार का सन को तो उसका नाम रहेगा भुवनेश्वर की। कौन है भाई? ये एक्स हवलदार का सन है। तो मतलब देखो उसका जो रेपुटेशन है एज ए हवलदार इज नेम एंड फेम है, बहुत मेडल मिला हुआ है और एकदम बढ़िया सा काम कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो उसका जो सन और डॉटर होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये इसका बेटा है, मतलब उसका बाप इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना बढ़िया है, तो उसका बेटा भी अच्छा ही होगा। मतलब एक रेपुटेशन से हम लोग मेजर कर लेते हैं उसका कैटेगरी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Actually, sir, how to measure actually reputational measurement? कैसे मेजर करोगे यार? तो उनका जो पेरेंटल रेपुटेशन होता है ना वो उसमें मेजर करेंगे। रेपुटेशन में कोई क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं रहता है। अच्छा, समझ में आ रहा है? okay. जैसे क्वांटिटेटिव रहता है कि 5% दिया, 10% दिया, 50% दिया, इसमें से क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है और उसका जो अपना रेफरेंस ग्रुप होता है। मान लो कि एक रिलीजियस हेड होता है और वहां पे एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है और चर्च हो या मंदिर हो, तो हम लोग जब भी जाते हैं ये मंदिर को, लोग बोलते हैं इसका, ये जानते हो यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, वो एकदम एकदम बढ़िया है, एक स्टूडेंट, एक लड़का काम कर रहा है, तो उसका रेपुटेशन बन जाता है। इससे सोशली अप्रूव्ड रेपुटेशन। रेपुटेशन को कैसे मेजर करेगा यार? रेपुटेशन बनाना पड़ता है, रेपुटेशन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ये क्वालिटेटिव है। इसमें क्वांटिटेटिव आप बोलेगा कि ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Okay, okay. अरे यार आपका रेपुटेशन जैसे होता है, आपका ऑफिस में आपका एक रेपुटेशन है कि नहीं? कैसे कैसे पता चला आपका रेपुटेशन है करके? पोस्ट के हिसाब से। हाँ, आप पोस्ट के हिसाब से नहीं, आप काम से हिसाब से। एक मान लो कि एक मतलब क्या कहते हैं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो अच्छा काम करता है। उसका उसका जो बिहेवियर है बहुत है, काम तो छोड़ो, वो तो मतलब उसका जो नौकरी है उसका तो दूसरा है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। जो अच्छा इंसान है, हेल्प करता है दूसरों को और कभी मतलब गुस्सा नहीं होता है और सबके साथ प्यार से रहता है, ये इसका रेपुटेशन बन जाता है वहां ऑटोमेटिक। तो हम लोग जब भी सोचते हैं अरे यार इसको पता है वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, इतना अच्छा है, कैसे हो गया यार इसे? अभी देखो लालचंद ज्वेलरी बोले तो एक रेपुटेशन बना हुआ है, उड़ीसा का फैशन ज्वेलरी स्टोर है मास्टर कैंटीन में। वो रेपुटेशन बनाया हुआ है क्योंकि जितना लोकल हीरो हीरोइन से इन लोग को लाके वो एडवर्टाइजमेंट करता है रोज। ये रेपुटेशन बनाया हुआ है, इसको कैलकुलेट यार नंबर में कैसे करेगा, मेजर कैसे करेगा? ये रेपुटेशनल एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्वालिटी उसका सर्विस मतलब इसको दिखाई नहीं देता है यार। रेपुटेशन मान लो कि एक सीईओ का लड़का है, वो थोड़ी सीईओ बनेगा, लेकिन हम लोग क्या बोले, अरे यार उसका पिताजी सीईओ है, रेपुटेशन बना हुआ है, तो उसको हम लोग बिलोंग कर देते हैं वही क्लास में। समझ में आ रहा है? सर सर। हाँ? डाउट है तो पूछो यार, फिर क्वेश्चन पूछ के रहे मत जाओ, पूछो मुझे। क्लियर क्लियर। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव मेजर्स, individual answers specific sociometric questions and then are categorized according to the answer. ऑब्जेक्टिव मेजर में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, ये चॉइस करो कि तुम्हारा सैलरी कितना है, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख, ये होता है ना, एमसीक्यू टाइप का होता है। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोशियो इकोनॉमिक जो क्वेश्चन होता है जैसे ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, I mean ये hereditary properties, your house, your dwelling areas, okay, all these are questions as given in a MCQ format. From there we can identify what type of social class the person belongs. समझ में आ रहा है? This is how you can measure. So your module 2 is over. If you are having any questions, you can ask me now. अरे पूछ सकते हो यार, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर ये थोड़ा शेयर कर देंगे? हाँ मैं भेज दूंगा, वो मैडम को भेज दूंगा, ठीक है? या मुझे एक बार कोई किसी किसी के पास मैंने भेजा था शायद,
क्या कहते हैं मॉड्यूल सर 1 वो का। एटीट्यूड का अभी तक, वो जो एटीट्यूड का पढ़ाए थे ना, वो अभी तक मिला नहीं। अरे ये तो मॉड्यूल 2 का खत्म नहीं हुआ तो फिर मतलब कैसे यार, तुम लोग भी खत्म होने दो ना, ठीक है। ठीक है। अभी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। अभी खत्म हो गया तो मैं आज शेयर कर दूंगा। किसी को मैं पहले भेजा था शायद मॉड्यूल 1 का। अरे मॉडल में की हुआ हेलो, तुझे थोड़ा लाउडली सुनाई नहीं दे रहा है। सर एक्चुअली जो 6 क्लासेस है हाँ, उसको थोड़ा एक बार बता दीजिए। कौन सा 6 क्लास? वार्म अप इंडेक्स के जो 6 क्लासेस है, अच्छा, ये क्लासिफिकेशन होता सोशल है क्लास। अपर अपर होता है, ठीक है। हम्म, अपर मिडिल होता है, ओके। हाँ लोअर मिडिल होता, लोअर सॉरी अपर मिडिल होता है, लोअर अपर मिडिल, देन लोअर अपर। ये हो गया 3 क्लास, समझ में आ गया। अपर अपर वन मतलब मिनट है। एलीट क्लास होता है, एडॉप्टर्स कैटेगरी होता है। हाँ अपर अपर ये आप 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कहते हैं अपर क्लास। अपर हम्म, अपर क्लास, एलिट क्लास। एलिट समझ में आ रहा है ना, एलिट हाँ क्लास हाँ वो एडॉप्टर्स कैटेगरी का होता है। हम्म, उसके बाद अपर मिडिल आता है। अपर मिडिल में इनोवेटर्स होता है, वो 4.5 कैटेगरीज का होता है, ठीक है। और हम्म, लोअर अपर क्लास होते हैं, वो होता है 3.2 कैटेगरी। सो इन एन एवरेज total belongs to 4.5 category of all these 3 upper class categories belongs to your क्या कहते हैं अपर क्लास। जैसे मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास एंड लोअर क्लास, ये अनदर 3 कैटेगरी हो गया। ये क्या कहते हैं मिडिल मिडिल मतलब ये थोड़ा सा अपर से और मिडिल से थोड़ा हाई लेवल में रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अपर मिडिल और मिडिल मिडिल क्लास। समझ में आ रहा है। जो सर अपर क्लास को और मिडिल क्लास का जो बीच का कैटेगरी होता है उसको कहते हैं अपर मिडिल क्लास। उसके बाद मिडिल मिडिल क्लास, इसके बाद लोअर मिडिल क्लास। हो गया 3 6, समझ में आ रहा है। ये जो हम्म, कहते हैं वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जो कैटेगरी होता है उसको कहते हैं लोअर मिडिल क्लास। देखो, आपका जो प्राइस इनकम है या ऑक्यूपेशन है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसको देख के आप लोग का क्या होता है, वो जो क्लास कैटेगराइज होता है। 1% बोले तो आई मीन दे आर हैविंग, जैसे देखो अंबानी के पास 88.3 बिलियन डॉलर है। उसके बाद सेकेंड रेंज में आता है अदानी, उसके बाद 22.3 बिलियन डॉलर है। देखो कितना गैप हो गया। तो उसको अंबानी को क्या बोलेंगे हम लोग, वो अपर अपर मिडिल क्लास बोलेंगे। अदानी को क्या बोलेंगे, ये अपर मिडिल अपर क्लास का कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आता है आई मीन योर डीमार्ट का ओनर रामकिशन दमानी, उसके बाद 15.3 मिलियन डॉलर है। समझ में आ रहा है। ये देखो ये हो गया अपर क्लास। उसके बाद आता है शंकर रामदेवन, तो उसके पास 3.4 मिलियन है, वो लोअर अपर क्लास में आ जाता है। समझ में आ रहा है 3 हाँ कैटेगरी का। हाँ देखो अदानी के पास 80 है, शंकर आई मीन के पास उसके पास है 3.5 मिलियन डॉलर। तो इसको देखो जितना गैप है, वो गैप में 3 क्लास को वो कैटेगराइज कर दिए। एक कैटेगरी को बोल दिया अपर अपर क्लास, वो अंबानी आ गया। उसके बाद अपर मिडिल क्लास में 2 आ गए, आपका अदानी आ गया और एक रामकिशन दमानी आ गया डीमार्ट का ओनर। और इसमें शंकर रामदेवन आ गया लोअर अपर क्लास में। समझ में आ रहा है। देखो सेम अपर क्लास है, कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ओके ओके okay, next class I'll teach your third modules. All right, so till then, bye bye, good night, थैंक यू sorry, सर good day, sorry थैंक sir. यू Okay.